अबाउट प्लानिंग। हाँ, हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी थी। आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और हम फर्दर देखेंगे कुछ कुछ चीजें इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड। बेटा, जो फर्स्ट चीज, द थिंग दैट वी हैड डन इन द लास्ट क्लास, it was basically we had gone ahead and we had talked about the reason why economic planning is required। इसके बारे में हमने बात की थी और हमने इस बारे में भी बात की थी कि why economic planning is important in countries। We also talked about the fact that those countries which say that they are not doing economic planning, बहुत countries ऐसा भी बोल रही थी कि हम economic planning नहीं कर रहे हैं, वो भी in fact economic planning कर रहे थे। They also were doing economic planning unknowingly। So there was no country which was not doing economic planning। सारी ही countries economic planning कर रही थी, कुछ बोल के एक्सेप्ट करके कर रही थी और कुछ बिना एक्सेप्ट किए कर रही थी, बट ऑल द कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन डूइंग इकोनॉमिक प्लानिंग। हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था वेल इन डिटेल। Today, I want to go ahead, I want to move forward, and I want to talk further about the history of economic planning in India। उसके बारे में हम थोड़ा और बात करेंगे। And at last, I will also be talking about the type of economic planning। उसके बारे में बात करेंगे कि what are the different kind of economic planning। And with that, we will come to an end of this chapter। ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, तो उसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा। सो last thing that we ended the lecture with was that economic planning helps us achieve different kind of objectives। Now, today we'll talk about planned versus non-planned economies। प्लान्ड वर्सेस नॉन प्लान्ड इकोनॉमी। तो जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ कंट्रीज ने डिक्लेयर कर दिया कि देखो हम तो प्लान्ड इकोनॉमी हैं, पर कुछ कंट्रीज ने बोला कि हम प्लानिंग नहीं करने वाले हैं, बट दे वर स्टिल इन्वॉल्व इन प्लानिंग। सो प्लीज राइट इट विद मी। Some nations formally declared themselves planned economies like USSR, China, India, France, while others like USA, Canada, Mexico did not. Though they still practiced planning at some level। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लानिंग, फर्स्ट आता है रीजनल प्लानिंग। ठीक है, first applied in the USA with the Tennessee Valley Authority 1916 for flood control, soil conservation, power generation, etc. It became
a global model inspiring projects like India's Damodar Valley Cooperation 1948 and Ghana's Volta River Project 1966। तो रीजनल प्लानिंग पहली चीज थी, माने हम पूरा का पूरा कंट्री में कोई तरीके का प्लानिंग नहीं लेके आ रहे हैं। वी आर ओनली ब्रिंगिंग प्लानिंग इन वन ऑफ द रीजन्स, ठीक है, इन वन ऑफ द सेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ओनली इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इफ आई ब्रिंग प्लानिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई गो अहेड एंड इफ आई से दैट सिर्फ सॉइल कंजर्वेशन करो, वो एक प्लानिंग है। हाँ, या इफ आई गो अहेड एंड इफ आई से कि सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेशन पे फोकस रहेगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करने पे फोकस रहेगा। सो व्हेन यू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर सेक्टर और वन पर्टिकुलर थिंग, तो उसे हम बोल देते हैं रीजनल प्लानिंग। सेकंड, नेशनल प्लानिंग, राइट, originated in the Soviet Union 1928 under Stalin with centralized 5 year plans। तो नेशनलाइज्ड प्लानिंग का क्या था कि द फर्स्ट टाइम वी सॉ नेशनलाइज्ड प्लानिंग इट वाज इन सोवियत यूनियन, जिसमें हमने पहली बार ही देखा कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए 5 year प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए। द फोकस वाज ऑन हेवी इंडस्ट्रीज, हाँ, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, forced industrialization। The model influenced many countries। एक्चुअली सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इसका इंडिया पे हुआ। इंडिया was the most influenced country by looking at USSR and by looking that USSR focused on heavy industries and USSR focused on the nation as a whole. It introduced 5 year plan। It was India, it was Eastern Europe, it was China who were very, very influenced by USSR. Okay? So by many countries, including India, Eastern Europe, and China, right? France adopted it later in a democratic, mixed economy setting। In a democratic mixed economy setting, ठीक है। So basically in short हम बोल सकते हैं that there were two kind of things that were happening। Planning, it started with regional experiments like TVA in the USA, and then it went on to national strategies like USSR's 5 year plan, right? Slowly, planning started spreading worldwide, right? And we saw that planning was not only in socialist economy, but indirectly, without knowingly, the capitalist economies were also adopting to planning, right? The application of planning were many, like population control, industrialization, budgeting. Everywhere we were noticing that there was planning। Okay, ठीक है। Now let us go ahead and let us further talk about how, so we have understood कि planning कैसे चला, but now I want to go ahead and I want to talk about how this planning emerged
types of plannings emerged. What was imperative planning? What was indicative planning? And what were the other classification of planning? Okay. So please write down beta types of planning. So write down. After the Soviet Union pioneered national planning, countries adopted different form of planning depending on their economic system. Right, beta? Mainly two types. First, imperative, which is also called as directive or target planning. And secondly, that emerged, that was indicative planning. But I have taken separate lecture on the two kind of planning, so I'm not going to repeat that. Imperative प्लानिंग, डायरेक्ट प्लानिंग, टारगेट प्लानिंग वो प्लानिंग था जो कमांड इकोनॉमीज में चल रहा था, जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज में चल रहा था. इसमें सब कुछ स्टेट के अंदर आता था, स्टेट कंट्रोल्स थे, प्राइवेट पार्टनरशिप्स, प्राइवेट पार्टिसिपेशन जीरो थी, मार्केट का रोल जीरो था, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग थी, और उसमें फिक्स टारगेट सेट किया जाता था कि इतने स्कूल बनेंगे, 10 स्कूल्स, इतने टन स्टील बनेगा. सो क्वांटिटेटिव टारगेट्स वर बीइंग सेट. राइट, ये यूएसएसआर, चाइना, पोलैंड, इन सब में प्रैक्टिस की गई. एंड लेटर देखा गया कि इसमें बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसीज थी. ठीक है, तो धीरे 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 इनमें रिफॉर्म्स आने शुरू हुए. राइट, लाइक चाइनाज ओपन डोर पॉलिसी, यू कैन रीड अबाउट चाइनाज ओपन डोर पॉलिसी इन डिटेल. इंडिकेटिव प्लानिंग ऑन द अदर हैंड मिक्स्ड इकोनॉमीज में फॉलो की गई, लाइक फ्रांस, जापान, इंडिया आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस. इंडिकेटिव प्लानिंग में हमने बोला कि हम कंप्लीटली मार्केट को हटाएंगे नहीं, वी विल नॉट लीव मार्केट कंप्लीटली, वी विल इंश्योर दैट देयर इज रोल ऑफ द मार्केट, प्राइवेट सेक्टर का रोल रखेंगे. गवर्नमेंट कोई क्वांटिटेटिव फिक्स टारगेट नहीं सेट करेगी कि 50 स्कूल्स बनाने हैं, 60 स्कूल्स बनाने हैं, बट एक ब्रॉड टारगेट सेट करेगी एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इनकरेज करेगी. सो इसमें बेसिकली पॉलिसीज जो थी वो इंडिकेटिव थी. इंडिकेटिव मींस इन्फ्लुएंसिंग थी कि ऐसा कर सकते हो, इंडिकेट करते हो. डायरेक्टिव नहीं थी, डायरेक्ट नहीं करते कि ऐसा करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. डायरेक्टिव मींस you are asking someone to do thing in a particular way, you're not doing that. It's indicative, you're indicating them that you can do it like that, you can do it like this. So it was influencing, it was motivating the private sector. Example, France Monet Plan of 1947 and Japan's post-war planning. These were indicative planning. अब जब हमने इंडिया का शुरू में देखा तो इंडिया ने भी इंडिकेटिव प्लानिंग ही फॉलो की, बट बोलने, ऑल्दो इट सेड वील गो फॉर इंडिकेटिव प्लानिंग, बट शुरू में प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ही लिमिटेड था and more of government sector was there. So we can say that initially India was more towards directive planning, but towards the end of 1991 we saw that धीरे धीरे India brought LPG, and with privatization India went towards indicative planning. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा also, other than this also, there are some other kind of plannings that we have. That those kind of plannings, although no book mentions the other kind of planning, but you can have other classifications of planning also. Right? Those other classifications include by territory. By territory माने रीजन और नेशनल. क्या हम एक रीजन में लेके आ रहे हैं प्लानिंग या नेशनली? बाय पॉलिटिक्स. बाय पॉलिटिक्स माने कि आर वी इंट्रोड्यूसिंग दिस प्लानिंग इन आर वी इंट्रोड्यूसिंग दिस प्लानिंग इन central, state, or local bodies, right? Third,
by participation means will it be centralized or decentralized? ठीक है. Fourth, by time, क्या वो लॉन्ग रन है या शॉर्ट रन है? By values, values means there are two kind of values. One is system planning and the other is normative planning. But in system planning, it focuses on the results, right? उसे social context से कोई relation नहीं है. उसको चाहिए कि 10 स्कूल बनाओ. ये स्कूल आप किसी से पैसा मार के बनाओ या पैसा आपके पास हो, उससे फर्क नहीं. It doesn't care about the social context. It just cares about the result. वो हो गया system planning. Normative considers the social factors, caste, culture, religion, tradition, etc. ठीक है. तो जैसे सिस्टम प्लानिंग कैन से गिव एम्प्लॉयमेंट, डज नॉट मैटर किसको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, बट नॉर्मेटिव प्लानिंग विल कंसिडर सम सोशल फैक्टर्स ऑल्सो. तो नॉर्मेटिव प्लानिंग कंसिडर करेगा कि नहीं नहीं नहीं, इस कास्ट के लोगों को भी जॉब मिलना चाहिए, इस कल्चर के लोगों को भी जॉब मिलना चाहिए, राइट? ओके, देन द सिक्स्थ वन इज बाय फोकस. So by focus, we have two kind of plannings. The first is sectoral planning and the second is spatial planning. Sectoral planning means किसी एक sector पे focus करना, like agriculture, industry, services. Spatial planning means you focus on some regional development, not sector. जैसे I can say focus on North India, South India, that is spatial. Sectoral means focus on agriculture, industry, services, right? So in short, main there are two kind of plannings, indicative and imperative. Imperative planning command economies में है, strict control है, quantitative regulations है. Indicative planning mixed economies में है, state guide करेगा but it will be under the market. मोस्टली इन टूडेज वर्ल्ड हम इंडिकेटिव प्लानिंग को देखते हैं. गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड रहता है, स्पेशली गवर्नमेंट का रोल इन द सोशल वेलफेयर सेक्टर रहता है, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी. Other than these two kind of planning, you also have other plannings like planning by territory, politics, participation, time, value, and focus. These are other classifications of planning over and above imperative and indicative. ठीक है.